Okay, let's start today's topic. That is types of sets. Sets के types. तो देखें, first one that is known as finite set. Anybody knows about the finite set? Yes, sir. Okay. Answer, what is finite set? Answer must be in simple words. What's your answer? What is finite set? Finite set which we can count. We can count. And infinite means which we cannot count. Excellent, excellent. All of you know this one. Yes, sir. Okay, what is finite set? You know, finite set is a set containing finite element. Finite element mean we can count them. So here we have this set P. Is it finite or infinite? It is finite. It is finite because the number of elements Finite. Finite. Reason because number of element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of elements in this P set are 6. Okay, so they are counted. So if you are able to count them, so it means that that is finite. Okay. This is your exercise question. No, sorry. This is example. So we will check questions like this in exercise and we will be able to solve them. So first you have done beautifully that 5, 10, 15, 20 and 25 are the elements of the set P. So number of elements in that set, that is 6. So 6 is a finite number. So it is confirmed that the given set is finite. Now we have second, for second, there that is set, let Q be the set of natural number less than 25. So how many natural number are starting from? 1. 1. 24, sir. Yes. 24 natural numbers. Because we are restricted there and it is said that you have to write the natural number less than 25. So less than 25 means we have to reach up to 24. Okay, so you can count them 1, 2, 3, 4 and so on up to 24. So number of elements in that Q set are, sorry, here you should write the N of Q. That is 24. Okay. Anybody have a problem in this? No, sir. Sir, I didn't understand this. Can you repeat it again? Who was this? What's your name? Rahmat. Rahmat, please repeat your question. सर जो वो वापस से वो जो आपने अभी बताया वो जरा वापस करें, मुझे समझ नहीं आया. Okay. इस क्वेश्चन 2 में Q is a set of natural number. Natural number are starting from 1, 2, 3, and it is said you have to write them this up to less than 25. So means we have to reach up to 24. आपने 24 तक जाना है.
मतलब 25 से लेस, 25 से कम, लेस मींस कम। तो आपने क्यू सेट में एलिमेंट्स लिखने हैं 25 से कम और वो भी नेचुरल नंबर, तो ये कितने होंगे? 24 1 2 3 अगर आप लिखिए और 25 से कम पे स्टार्ट करें, स्टॉप करें, 24 तो ये होंगे 24। ठीक है, 24 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। तो ये वाला भी फाइनाइट, ये वाला भी फाइनाइट। ठीक है। नो the third one, in third one R is a set of whole numbers between 5 and 45, means 5 and 45 are not included। इसका मतलब 5 और 45 इसमें नहीं है, लेकिन इसकी बीच में जो नंबर है you have to mention them। The number that are between 5 and 45, try to count them just like this one: 6 6 7 8 9 10 up to 44। so how many are they? Count them on your fingertips। 38. 38 mean 6 7 8 9 10 up to 44 तक आप जाएंगे तो you are getting they are 38। okay, anybody have problem in this question? No sir। Okay, good। so the number of elements are 38, so it means R is finite। okay, the question 4, the set of all persons in Pakistan is a finite set, is it true or false? पाकिस्तान में जितने लोग हैं क्या वो आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। काउंट कर सकते हैं लेकिन टाइम लेगा। कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले हर घर अपने में एक एक बार लेके आए। पहले आप अपने घर में काउंट करें, फिर आप अपने खानदान में काउंट करें, फिर आप अपने मोहल्ले में, मतलब टाइम लेगा लेकिन काउंट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है। और ये है द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स इन केपी इन इज अ फाइनाइट। It's infinite Infinite because they are so much। सर यस, वो एक दिन में पता नहीं कितने बच्चे नहीं नहीं, जितनी भी है, लेकिन है तो सही ना। अब ये तो नहीं कि अगर आपको कहें कि आप क्या करें, आप हाँ, आप इस तरह करें कि आपको कहा जाए कि आप जितनी भी क्या है रेत रेत उसमें जर्रे हैं, तो वो तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, वो आप नहीं काउंट कर सकते। लेकिन बर्ड्स हैं तो वो तो आप देखिए आपके घर में आसपास कितने बर्ड्स हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, बट वी कैन काउंट देम। आप खैर देखिए कि टाइम लगेगा लेकिन काउंट कर सकते हैं, तो इट मीन दे आर फाइनाइट। ओके, इस पे कंफ्यूज ना हो, जो ज्यादा टाइम मिलेगा तो फिर भी हम काउंट कर सकते हैं, एक बंदा नहीं। अगर आप इस तरह करें कि आप कहते हैं कि आप 50 दोस्त हैं, तो आप सबसे कहें कि आप अपने अपने गांव में जाके सारे काउंट करें, तो फिर हो सकता है। हाँ, ओके। If a set is not finite, so that is known as infinite, mean if we are unable to count the element of that set, तो फिर उसको हम कहते हैं what? If the elements of a set are not countable, if the elements of set are not finite, so that will be infinite। This n just shows the opposite of this, because you know correct, what is the opposite of correct? Correct का उलट क्या है? Incorrect। so this n shows opposite, so finite infinite।
जो फाइनाइट ना हो तो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। तो जरा मुझे बता दें इनफाइनाइट कौन से होते हैं जिसको हमें काउंट करना काउंट नहीं कर मुश्किल हो। सकते। शाबाश। नाउ नहीं कर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Like star. Like star. ओके, a set that contains infinite number of elements, a set that contains the elements which we cannot count, that is infinite, yeah, in simple word infinite set. You can say infinite or infinite set. Okay, the examples. The set of all positive integer which is a multiple of 3 is an infinite set. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे लफ्ज वर्ड, okay, here is the word infinite. Oh, sorry. Here we have here the word multiple is used. Multiples of 3. Multiples of 3 means 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12. इसका मतलब multiple of 3 means multiply table of 3. So is table of 3 finite? 3 ones are 3 twos are 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3000 or 3001 and 3000 and मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो is it finite or infinite? Infinite. Infinite. Anybody have a question about this? Multiples of 3 mean when you start the table of 3 and it will give you positive integers, yeah, positive numbers. So is it finite? No, because we cannot stop them. Just it is said that multiples of 3. If it is said that multiples of 3 up to 30, तो फिर ये stop हो जाता है. Here it is mentioned that multiples of 3. Okay. The second one. Second one, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, and dot, dot, dot. So the set which is starting from 0, that is known as set of Whole numbers. whole number. Excellent. The set of whole numbers. शहराम जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि 0, 1, 2, 3 dot dot is it finite or infinite? Finite. Finite? Is it finite? I think so. It is not finite. It is infinite. This is infinite because the last term is not known. And we cannot stop them. So that's why the given set is infinite. And typically we say infinite. It is Okay. infinite. You know set of integers. Set of integers containing all positive, all negative, and 0 as well. 0, 1, 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3. It is expanding in both sides. So is it finite or not? सर ये इंटीग्रस किसे कहते हैं? जी इंटीग्रस. हाँ, okay. The proper word for this is
it is not integers, it is integers. Integers, it is just like Germany, GERMA. So it is Oh. integer. Now you this was confirmed that the word is integer. No, it's हम ये कैसे पहचानेंगे कि what is integers? Integer is a set of numbers which start from 1 in positive side as well as it has negative elements as well. So as a whole, this is known set of integers. Set of integers contains 0 and plus 1 minus 1, plus 1 minus 1, plus 2 minus 2, plus 3 minus 3, and so on. Got it or not? It is finite. Yes, I got it, but Is it finite or finite. infinite? Can you differentiate between the word finite and infinite? Finite means fixed. Finite means which we can count. Yes. And infinite means which we can can't count. Which is not possible to count. So Yes. we have in this direction. Is there the last element exist or not? No. Because it is 0, 1, 2 and dot dot means okay, it is increasing, and in this direction it is minus 1, minus 2 and so on. So it is decreasing in this direction, it is also increasing. So this set is infinite. Got it? Infinite. ये खत्म नहीं हो Yes, रहा. my answer. Okay, very good. You people, all of you must have to be very consistent. मतलब आप सबको इस क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए. You can ask question, you can reply me. So in this way, we have to continue the class. Okay. The third, how many types? First type was finite, second type infinite, and the third one, that is empty set. By empty, what do you mean? Empty that has no elements. Empty mean having no element. Empty having nothing. So, and the empty set is a set which contains how many elements? 0. No. Yes. If you write 0, is it infinity? Oh, sorry. Is it No. empty? Yes. It is. It should not have 0. Then it will be empty. The number of elements in this set must be 0. Matlab there should be no element in that set. And there are two notations. दो symbols हैं उसके, दो अलामात है. अगर आपने ये लिखा, so this is empty. If you write it as, so this is also empty. You have to write one of them. मैं इससे पहले इसलिए समझी आंसर नहीं दे पाता था क्योंकि इतना बोलते थे, अब तो नहीं बोल रहे. आपके आवाज थोड़ी सी स्लो गई तो इसलिए मैंने पूरा नहीं सुना. जरा फिर से बता दें. नहीं, इससे पहले ये इतना बोलते थे कि मैं ना आपका आवाज सुनता था और आप मेरी भी नहीं आवाज सुनते थे. तो आज ये क्यों चुप है इतने ज्यादा? जी, सबके माइक खुले हुए फिर भी ये चुप है. हाँ बिल्कुल. तो एम्प्टी सेट सबको समझ आ गया. तुमने हमारी आवाज सुन ली. ओके. थैंक यू. एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट देखिए अभी. the first example of empty set, that is the set of months with 32 days.
क्या ऐसा महीना है जिसमें 32 डेज होते हैं? No. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब में? No. नो। तो इट मींस इट इज अ सेट बट इट हैज नो एलिमेंट। ठीक है, आपको ये कहा जाए कि द सेट ऑफ बॉयज in your school whose height are 95 feet, Yalla. so it exists ही नहीं करा, तो it means that the set is empty. Yes. अभी आपसे कहा जाए कि ऐसी स्टूडेंट्स का एज तो ये चलो ऐसे आपके स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स जिसका एज है 50 ईयर, Yalla. इतने नहीं है ना? ज्यादा बड़े स्टूडेंट होते भी नहीं है। ये बड़े बाबे होते हैं। चलो ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, टीचर हो सकता है। हाँ टीचर हो सकता है। हाँ, तो मैंने कहा टीचर था, तो 70-80 का भी हो सकता है। हाँ, तो मतलब कि empty set you have to find element for this. If you cannot find any element, so you have to write them as empty. Set of whole Yes. number less than 0. You know, whole numbers. No. Whole numbers are starting from 0, then 1, 2, 3. Is there any element in that set of whole number which is less than 0? No. No. Excellent. So your answer is? No. Your answer is empty. Yes. Okay. Excellent. Shabash. Participate in your class. You all are appreciated. You know singleton set? No. Okay. Let me It explain. is something new. Yes. Sir. This set, if a set has no element, that is said to be empty. Empty set. If Yeah. a set contains only one element, that is known as Singleton. 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 Its spelling is Singleton. Saingle, singleton. My eyesight is weak, so I cannot see clearly. So Yes. and my spectacles are broken, so I cannot see. And Okay, so it's a spelling that is not clear to you. That is single, Singleton, singleton set. Got it? okay. Yes, sir. Got By it. singleton means single. Single. So if a set, Single means one. if a set containing only one element, that is known as singleton set. Got it? Okay, sir. I got it. Example, this set contains how many elements? One. One. Yeah. Yes. If someone says 0, no, it has an element. The element is 0. Yes. No. So this is The singleton. element is 0, but it contains Yes. Second one one. element. How many elements? It has 2 elements, and it is not singleton. Oh, is there 1, 0 or 10 in that set? It is 10, so that is not singleton. No, 10 means how many elements? 2 elements. No, 1, 0 is not equal to this one. Okay. 10 is one element. Okay, it is one element. The 1, 0. If there is comma between them, so this will differentiate that there are 2 elements. Okay. Okay, excellent. ये क्वेश्चन जिसने भी बोला तो ऐसे बहुत सारे के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए, उसको इसका समझ जो नहीं आ रहा था वो समझ जाएगा। तो ये contains only one element, so this singleton, that is singleton, and the last one has only one name, that is Nasir. So Nasir. So it is singleton.
It is singleton. Yes, sir, it is. Excellent, excellent. And the other one, next topic, that is Equivalent sets. equal sets. By equal set, we mean if we have two sets and both the sets containing same elements. If all the elements of one set are same as the elements of set B, then we say that the sets are equal. So set A and set B. Let here set A contains 1, 2, 3, and set B also Yes. contains 1, 2, 3. So it means both the sets are Equal. equal. Excellent. Zabardast. And there is a difference between that is equivalent set. By equivalent set, Okay. only the number of elements are equal. Okay. Equivalent set का जो symbol है ये है A is equivalent to B. Yes. So if number of elements in set A and number of elements in set B are equal in numbers, Equal. It is equivalent set. if both are same, Then it. equal. If the number of elements, there are three elements, number of elements are equal, so that is equivalent. So, Equivalent. yes. Yes. Now 1, 2, 3 and A, B, C हाँ. are equal. Yes, तो Set A and इसमें set B. इसमें 3 है, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है. Yes, it is equivalent. Yes. Is there anyone who cannot differentiate between equal and equivalent set? In equal set, element and their numbers must be same. इसमें elements और इसकी तादाद, इसमें elements भी same हो, तादाद भी same हो. इसमें just only the number of elements, तादाद same. So that is called equivalent set. And the symbol is also different from each other. Here it is equal sign, and this is 1, and that is just like mad. Sir? These two are different. So first one is for equal. Okay. सर और इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए? जी जी जी. इक्वल सेट में तो तादाद और नंबर एक जैसे होने चाहिए. बिल्कुल. इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए? और इक्विवेलेंट में तादाद सिर्फ बराबर होना चाहिए. एक दूसरे से A में 1, 2, 3 और set B में A, B, C. तो फिर ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है. अगर ये A B C की जगह ये 1 2 3 होता तो फिर आप इसे नहीं इक्वल कहते. और अगर A की जगह A B C होता और ये भी A B C तो फिर ये इक्वल होता. सही है? ओके सर. ओके. सर बस टाइम भी खत्म हो गया. It's your task. You have to do this one. इक्विवेलेंट और इक्वल इसमें कौन कौन से हैं? सर इसमें क्या करना है? ये आपने बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से इक्विवेलेंट है. तो देखिए पहले इस जैसा कोई सेट इसमें है? नो नहीं है, तो मतलब देयर इज नो इक्वल सेट फॉर दिस वन. सर और इसमें कोई इक्वल नहीं है. हाँ बिल्कुल. 5 8 11 14 उसमें नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं रहा, इक्वल नहीं रहा. इस तरह कोई और नहीं है, इक्वल नहीं रहा, इक्वल नहीं रहा, इक्वल नहीं रहा. तो मतलब देयर इज नो इक्वल सेट्स. और अब यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स?
तीन चार Four. सॉरी Four. No, There are and four. so they are equivalent. Uh, और सर और इसके बाद भी दो फिर दो ये S में भी 4 है तो ये भी इसका इक्विवेलेंट है। S में भी 4 है तो ये भी इक्विवेलेंट है। S में भी 4 है तो ये भी इक्विवेलेंट है। तो मतलब सब सर इक्विवेलेंट है। नीचे सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है ऑल ऑफ द गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट, इसीलिए हमें पता चल गया। तो नहीं, और आपको कांसेप्ट क्लियर नहीं था? सर नहीं लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट भी नीचे से क्लियर देखा था नहीं लेकिन है। सर नीचे लेकिन भी मैंने देख नीचे लिया। वाली जगह शाबाश, रीड नहीं की। शाबाश, वेरी गुड। रीड You are very good in कॉन्सेप्ट तो mathematics, क्लियर है। as I know. Who? Uh, I think it's enough for today. Yes, sir, and the time is finished. Yes. So And we have to go for prayer.